वेलकम अब्दुल सर इन अवर शो। आज के इस इंटरव्यू के अंदर हम अब्दुल सर से जानेंगे फंड रेजिंग के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, टीम बिल्डिंग के बारे में। अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कैसे आप लोग फंड रेज कर सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो। और इंडिया में इस समय जो एक मिथ चल रहा है, अफवाह उड़ाई जा रही है कि इस समय फंडिंग का क्रंच आ चुका है, फंडिंग को रोक दिया गया है इंडिया के अंदर, जबकि काफी सारे स्टार्टअप्स जैसे फिजिक्स वाला ने अभी फंड रेज करा है और काफी सारे स्टार्टअप फंड रेज कर रहे हैं। तो क्या है स्टार्टअप फंडिंग के बारे में, कैसे स्टार्टअप फंड रेज करते हैं, कैसे बिजनेसेस को बिल्ड करा जाता है, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड की रियलिटी बिल्कुल अलग है जो अब्दुल सर ने फेस करी है। इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप के साथ, कंपनीज के साथ काम करा है, उनको स्केल करा है, मेंटोर करा है, बिल्ड करा है, और अभी इनके पोर्टफोलियो में 100+ स्टार्टअप्स है। तो अब्दुल सर, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? So I started my career about 12 years back. I started working with this logistics company called TNT. Courier company है, based out of Mumbai, but a global company. वहाँ पे customer service vertical में चालू किया. I worked there for 5 years, moved across verticals from customer service to major accounts to sales to operations to P&L. Spent about 5 years there. After that, I moved into a family-run business, not my own family-run, but a different family. And the mandate there was to disconnect ownership from management. I worked there for a year, worked in another family-run business in the Middle East for a year and a half. So after about 7-8 years of work experience, I kind of realized it's very difficult to break or grow traditional businesses because the mindset and the bureaucracy involved is काफी तगड़ा है वहाँ पे. Right. Uske baad, I moved into startups. So my first startup experience, honestly, is with Trebo Hotels. I was leading Mumbai, and then I moved to manage Mumbai and Goa. Uske baad, I moved to Oyo, established their Saudi operations, was the country head for Saudi Arabia, led their larger Middle East expansion. Subsequently worked with a few other startups, which include Miro. It's a French unicorn in the photography space, with delivery, with Shipper, a delivery-like startup based out of Indonesia. And then, last year started building my own venture, which is Have. Yeah. ओके ओके सर। तो सर, ये जो स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी है वो आपको कहाँ से मिली? नेटवर्क्स के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, या फिर डायरेक्टली उनके साथ अप्लाई करा? So it पहला तो अपॉर्चुनिटी जो ट्रीबो वाला था वो लिंक्डइन से मिला था, right? I saw an opportunity, I applied, but I would not say it was just an application in the job section of LinkedIn. I saw the posting there. I reached out to the hiring manager, sent him a personalized message, realized that he was traveling to Mumbai, met him, took the effort, right? After that, it has been through networks. So, opportunity from Oyo came because they knew that I was doing well at Trebo. From Oyo, I went to Miro. So all of those has been largely connections. But my thinking is opportunities exist primarily on LinkedIn and through networks. Again, on LinkedIn, you have to take that extra effort. ओके ओके। तो सर, कभी आपको ये रिस्क फील नहीं हुआ कि आप एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, एक स्मॉल बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि जनरली इंडिया के अंदर लोग इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस या गवर्नमेंट जॉब में बड़ी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे सिक्योरिटी ले लॉन्ग टर्म के लिए, बार बार करियर स्विच ना करना पड़े। क्योंकि मैंने देखा आपने काफी सारी कंपनीज में अपने करियर को स्विच करा। तो क्या ये एंटरप्रेन्योर के लिए, या कोई पर्सन जॉब अच्छी ढूंढ रहा है, उसके करियर के लिए चीज सही रहती है? ये जरूरी है कि तो ये जरूरी है कि काफी एक्सपीरियंस मिले, और एक्सपीरियंस सालों में नहीं होता है. Experience is basically how many instances have you handled, which mean that next time you face a similar instance, you know how to handle it, right? And that can only be multiplied. So if you spend 3 years in a startup, it's probably is as good as spending 10 years in a traditional or a very set up organization. So मेरा मानना है कि irrespective of the risk involved, right? And the risk is largely financial, कि हमारा जो equity ESOP दिया है in compensation of a pay cut, which probably is in the most cases, उसका value 0 हो जाए. दूसरा ये है कि हाँ, अगले दिन सैलरी ना मिले या जॉब से निकाला जाए.
right? But I think that risk is worth it, especially if you're in your early 20s or early 30s, right? Because that, obviously not early 20s, but entire 20s and early 30s, that's the right sweet spot to kind of explore, learn, and you're prepared a lot better. So मुझे कभी risk नहीं लगा. मुझे, I would say working with startups actually is like a nasha, honestly, right? The addiction that you get working with the startups, the satisfaction that you get is really insane. राइट सर, राइट सर। आजकल जैसे हम स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, फंडिंग्स को देख रहे हैं, तो जनरली जब फंडिंग की न्यूज आती है तो मालूम पड़ता है ये स्टार्टअप या तो मुंबई बेस्ड है, या दिल्ली बेस्ड है, या फिर इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर बेस्ड है। आपको लगता है इन्वेस्टर्स छोटी सिटी के अंदर जहां पे इतने सारे स्टार्टअप्स आज के टाइम में आ रहे हैं, वहां पे पैसा लगाने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि वहां से हमें कोई न्यूज देखने को नहीं मिलती है? So मेरा मानना है कि ये कैपिटल एलोकेशन जो हो रहा है is not from the perspective कि कौन सा शहर से आ रहा है, right? इन्वेस्टर्स को ये डिफरेंस नहीं कि बैंगलोर में बेस्ड है या भोपाल में बेस्ड है. For them it's the same. उनका एक ही मकसद है कि हमें कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए. मगर ये मेरा मानना है कि जो टियर 2 या बिलो सिटी से आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनका सोच है कि कैपिटल प्रोटेक्शन. While entrepreneurs in tier 1 cities usually talk about capital appreciation, it's 0 or it's 1. बीच में कुछ है नहीं, right? So I don't think capital allocation is having any bias in terms of cities. हाँ, जरूर ये है कि हम announcements देखते हैं मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, but that's also because कि वहां पे बड़े बड़े मार्केट्स है. ये जरूरी नहीं है कि वहीं पे entrepreneurs बिजनेस चला रहे. ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने कहीं और से रेस किया है या कहीं और पे टीम्स चला रहे, कहीं और बिजनेस चला रहे, कंपनी इनकॉर्पोरेट बैंगलोर में किया हो, राइट? उतना ही है. आई थिंक देयर इज नो बायस इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. हाँ, जरूर ये हो सकता है कि बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर बीन इन बैंगलोर इज एक्सपोज्ड टू अ लॉट मोर स्टार्टअप्स, he learns or the probability of success of people in Bangalore are a lot better or in other cities are better. So I don't think there is a bias. There is, yeah, simple, there's no bias of that. ओके, ओके सर। सर आपको एक चीज ये लगती है, इंडिया के अंदर जब एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम में बिजनेस को चालू कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट से पहले ही फंडिंग के पीछे भागते हैं, या फिर जब कोई भी दिक्कत आती है तो उनको लगता है कि फंडिंग एक सोल्यूशन है जिनसे वो बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इतने सारे स्टार्टअप्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग को रेज कराए, फिर भी उनके वेंचर फेल हो गए। I think हाँ जरूर है वो attitude, right? I'm not saying हर startup founder में या entrepreneur में वो attitude है, right? But I think it is relevant and it is seen in a majority of entrepreneurs that they do not want to start building unless they get funding. Second is if they get funding, they grow really fast without knowing whether this is a product that really matters, whether this is a product that really people are wanting and people are willing to pay for, right? I think that's a negative sign. And I think with the funding winter, what the so-called funding winter, I think some of those will hit roadblocks, right? And that technically means smart founders who know to build business, who are probably getting distracted with all of the big funding news last year, can actually start building structurally proper businesses which can scale, once they have a product market fit. Not companies that grow on the back of money, but companies that grow on back of really good products and teams. ओके, ओके सर। जैसे आप स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फंडिंग के लिए, तो आप स्टार्टअप में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? मेरे लिए फिलहाल इट्स प्योरली टीम. जो फाउंडर्स है, फाउंडर्स के लाइक द फाउंडिंग टीम, द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, देयर कैलिबर, राइट? बिकॉज at the end of the day, everyone can have ideas, right? The execution of it, the validation of it, bringing people to agree that this is an idea worth our time is important. So for me, it is founders, right? Nothing else matters, because you might invest in a business today and 2 years later, that company might not be in the same business. It might be in a completely different business. So it's only the founders that I would look at this stage, nothing else.
ओके सर, आप फाउंडर्स को जज कैसे करते हो? बिकॉज फर्स्ट मीटिंग के अंदर, सेकंड मीटिंग के अंदर इतनी इजीली हम किसी पर्सन को जज नहीं कर पाते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फाउंडर हमारे पास आ रहा है तो हर फाउंडर सबसे बेस्ट चीज ही अपनी दिखाता है, सबसे अच्छी चीज दिखाता है, डार्क फेस कोई दिखाना नहीं चाहता। तो आप जज कैसे करते हैं फाउंडर्स को और उनकी टीम को? दो तीन चीज है. एक तो द वे दे हैव अप्रोच्ड यू, राइट? Did they approach you in a very smart way, right? Like whether it be LinkedIn messages, whether it be emails, WhatsApp, or connections, did they reach you with a crisp and short message where you were impressed, right? That's the first thing. Second is, how good is your social profile? When I see your message or your email, the first tendency of any investor is to go and check your LinkedIn profile, right? In some cases, your Twitter profile. When I look at your LinkedIn or your Twitter profile as a founder, I expect to see it to be polished. I expect to see a lot of good content where I feel that I want to spend 30 minutes or 45 minutes of my time understanding what he or she is up to. Because if he or she is building something, that must be something good, right? So the way you approach your profile in public, these are the two first steps, right? And this is what defines whether you get that first meeting or not. Apart from that, obviously, the deck that you probably share upfront is also important. However, after that, when you talk to a founder, so if I decided to spend 30-45 minutes with a founder, how do I decide if this is an impressive founder? Is few things. One is investors do see decks almost every day, right? And they probably have seen a deck in similar space in the past. Nobody is going to have an idea that nobody else on earth has had in the past. So what's more important is the founder able to present his idea, team, traction, everything in probably 5 to 7 minutes in such a way that I do not feel that this is boring, nor do I feel that I don't understand this. Bouncer nahi hai mere liye, right? If somebody is able to explain that in 5 to 7 minutes, and in that 5 to 7 minutes build relationship with me, right? Come and say, hey, how are you? Like, oh, you know what? I know a friend who lives in the same city. Thoda relationship ka effort bhi try kare, right? Because this is not a financial transaction completely. So, wo 5-7 minutes plus relationship building, and then when you get into question and answers, जब investors सवाल पूछते हैं, दो तरह का नेगेटिव्स हो सकता है. या तो आप सवाल का कुछ लेना देना नहीं, कुछ और ही आंसर दे रहे हो, अपना ही दुनिया में लाइक कुछ आंसर दे रहे हो. इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? If you've been asked a question, either you answer to the point or you say, I don't have an answer, let's figure this out together. That's a smart way of handling it. The second is, if I give you a feedback basis my thinking and my seeings of other startups, be receptive to it, or defend or justify in a nice way, right? Don't get taken aback. So I think these are a few pieces which help build conviction in one call or two calls as an investor. If all of this is good, and then also the things that happen in between, right? After a call, do you think the founder messages you saying, hey, it was a good call, really appreciate any feedbacks, whatever, like, वो effort दिखना चाहिए, right? It is not मैंने call किया अब आप बताओ कि क्या हो रहा है, right? Follow up. Show that passion कि आप जितना investment ले रहे हो उसी तरह passion दिखाएंगे धंधा बनाने में, right? If somebody sees that passion, they would be happy to try out at some point in time. ओके ओके राइट। एक फंडिंग आने के बाद जो स्केल करना है, उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, वो बड़ी मुश्किल होती है। जैसे अगर आज के टाइम में हम देखें, जोमेटो, बायजूस, अनअकैडमी, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे। इन्होंने स्केल तो कर लिया, रेवेन्यूज को बढ़ा लिया, टीम बढ़ा ली, अपना एक्सपेंशन भी कर लिया। सर, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियन स्टार्टअप्स जब स्केल करते हैं तो जो उनके ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो भी साथ साथ बढ़ जाते हैं और लेटर ऑन लॉसेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं? हाँ, ये जरूर है. Like this is like having worked in India, having worked in Middle East, having worked in Southeast Asia. I think again, not generalizing, not complaining, but there is a tendency of throwing people at a problem in India. हाँ यार, लोग सस्ते हैं, मतलब डालो लोगों को. Like सेल नहीं हो रहा, सेल्स लोगों को हायर करो. मार्केटिंग नहीं हो रहा है, मार्केटिंग हायर करो.
ऑपरेशंस में फटा हुआ है तो ऑपरेशंस में लोग हायर करो, राइट? दैट्स जस्ट अ टेंडेंसी ऑन हाउ इट gets built out. It's okay. It's okay in the initial growth phase or when you're scaling really at breakneck speed. But the problem is then you also should know on how to pull this back, right? How are you able to automate, or how are you able to get better pricing from your consumers because you have an additional cost layer. So I think ये जरूर है कि businesses today probably don't know where to make money. एक्सेल शीट में दिखा सकते हैं कि हाँ इस प्राइस पे हम बेचेंगे, ये हमारा खर्चा है, बट प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि एक तो खर्चा उस पे नहीं बैठता, उसके ऊपर ही जाता है, और रेवेन्यू तो उतना आता भी नहीं है क्योंकि कस्टमर वो देने को तैयार नहीं है. सो आई थिंक हाउ डू यू कन्वर्ट रियलिटी इनटू द एक्सेल शीट, या एक्सेल शीट वाला रियलिटी को एग्जीक्यूट कैसे करे, ये इंपॉर्टेंट है. ओके ओके सर. सो इंडिया के अंदर जितने भी सर स्टार्टअप्स हैं, जब वो स्केल अप करते हैं, फंड रेज करते हैं, आज के टाइम में मैंने एक और चीज देखी, जब हमारे पास स्टार्टअप्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास सीटीओ नहीं मिल रहा है, टेक के बंदे नहीं मिल रहे. सो आपके क्या इस पे व्यू पॉइंट है कि इंडिया के अंदर सही में टेक के टैलेंट, अच्छे टेक के टैलेंट की कमी है, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है और रिटेन करना सबसे बड़ी बात. यूजुअली ये है कि जो फाउंडर्स होते हैं बिजनेस बैकग्राउंड से जो आते हैं, उनका ना नेटवर्क ज्यादातर बिजनेस लोग होते हैं, राइट? टेकीज, प्रोडक्ट लोग नहीं होंगे उनके नेटवर्क में. So that's the struggle. So it's not a complete mismatch of supply and demand, but it's just that you probably don't have that network because you spent a lot more time in the business side of things, right? Like, you know, as a founder, right? But tech का एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन जरूर थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है. लाइक यू नो, इट इज थोड़ा बबल है उसमें, राइट? कि हमें ये चाहिए, दैट इज reality. Now, do you need a CTO? Not necessarily always, right? हाँ, कहीं स्टार्टअप्स है जहां पे टेक इज नॉट द कोर, टेक इज एन एनेबलर. वहां पे as long as you're able to prove your point that you're able to use no code technology or whatever, right? As long as you're able to build a tech and validate your market, probably CTO bhi aayega. And remember, as we spoke you know, at the beginning of our interview, we spoke of the risks involved in joining a startup. Now the problem is a CTO or a tech guy or a product guy has so many options available in the market. तो उनके लिए बिना रिस्क अच्छा पैकेज मिल रहा है. So why would they join you? Now the point is you have to show them that हमारा जो बिजनेस में रिस्क्स थे उसको हमने एलिमिनेट किया है, वैलिडेट किया है मार्केट में. Now come and join us because हमारा रिस्क तो nullified है, हमारा अपसाइड है, right? I think that's how I look at it. But yeah, coming into expectations and what's happening in the market, it looks to be slightly on the bubble side of things. ओके. सर आपने इतने सारे बिजनेस के साथ काम करा है, स्टार्टअप्स के साथ काम करा है, जो यूनिकॉर्न्स भी रहे जिनमें से 3 स्टार्टअप्स. आपका क्या व्यू पॉइंट है, जो कंपनी का सीईओ होता है और फाउंडर होता है, उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए? टीम बढ़ाने में, टॉप टैलेंट को लाने में, या फंड रेज करने में? I think it is two, right? It is a vicious cycle, right? You need to bring smart people in the team who are better than you, who are functional experts, who are probably generalists, but people who are really smart and can add value to your business. Zarurat hai. But to hire that kind of a talent, you need capital, or you need to give the message that we are strong, we are backed by great venture capitalists. Hamare paas hai, like you come in, we have money to pay you, we have money to even support the ideas that you come up with. So I think a founder will, like, I believe as a founder, there are 3 things that they should focus on: attracting capital, attracting talent, and ensuring that the business has a 360-degree view. ये ना हो कि हम 90 degrees पे focus कर रहे. You need to know कि कहाँ से competition आ सकते हैं, कहाँ पे हमें grow करना पड़ेगा, how do you mitigate your risks. So I think these are the 3 things. So talent and capital is not separate. I would say those are the 2 main things that the founder should focus. ओके ओके. सो फंड रेजिंग पे भी उनको फोकस करना चाहिए और साथ साथ टॉप टैलेंट को लाने में भी. और सर Correct. सीईओ को और फंड, जैसे अब आज के टाइम में जो स्टार्टअप फंड रेजिंग कर रहे हैं, क्या उनको एक्सटर्नल सर्विसेज की मदद लेनी चाहिए, पिच डेक डिजाइनिंग करना,
बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल्स बनाना, या फिर वो खुद से शुरुआत से ही सीख के प्रिपेयर करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरा मानना है कि सर्विसेज नहीं लेना चाहिए, हाँ जरूर एडवाइस ले सकते हैं, रीच आउट टू पीपल इन योर नेटवर्क एंड से दैट आप बता आप मेरे साथ spend 2 hours 3 hours and explain to me what I should be doing correct. But you as a founder need to make it on your own, because your ideas when made by someone else will never be the same. और जब आप explain करने जाएंगे किसी और बनाया हुआ डेक, वो पैशन नहीं दिखेगा, राइट? वो स्टोरी लाइन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं आएगा कि ये यहाँ पे क्यों डाला गया था, ये तो तीसरा स्लाइड पे होना चाहिए था टाइप, राइट? सो ये जरूरी है कि आपको खुद बनाना है, मगर हेल्प लेना भी जरूरी है, राइट? एडवाइस ले कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कितना होना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, और जो डाला गया है वो सही है या गलत है, राइट? दैट्स माय थिंकिंग। ओके सर, जो एक स्टार्टअप है, फाउंडर से जब वो फंड रेज कर रहे होते हैं, तो क्या उनको सीधा गूगल पे जाके जो वीसी फर्म्स है उनको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, या लिंक्डइन के थ्रू जो उनके कनेक्ट है वहां पे पीपल सेक्शन के अंदर जो टीम होती है उनको अप्रोच करनी चाहिए? बेस्ट वे क्या रहता है फंड रेजिंग के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने का? The most appropriate thing to do is know which fund or which investor fits your current stage, current sector, right? There could be 100,000, 10,000 investors, but not necessarily everyone's investing in every sector, in every stage of a company, right? So I think first is you knowing as a founder which investors are right for me at the stage that I'm at, this in the sector that I play. That's the first thing. Once you've identified that, the best way is to reach out through connects. देखिए कि उन पोर्टफोलियो कंपनीज में मेरा alumni कोई है, मेरे साथ जो काम किया उस कंपनीज में है क्या, right? Because a reference from a portfolio company of an existing investor, yeah, somebody who works there closely in some format will always be powerful. So always, it might seem easy to go and fill a form on their website. It might seem easy to send a connect request to LinkedIn, on LinkedIn to somebody working there. But if you take the effort of reaching out to someone who already has a relationship and knows you subsequently, is an easier thing. 2 दिन और लग सकता है कि ढूंढने में, और वो बोलेगा कि यार आज टाइम नहीं, मैं कल डाल देता हूँ, बट इट्स वर्थ इट, बिकॉज जब वो मेल डालेगा वो उस तरफ कोई तो पड़ेगा जरूर, राइट? आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके ओके सर। सो सर, आपने इतने सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करा है, 3 यूनिकॉर्न के साथ काम करा है, अभी आपने खुद का स्टार्टअप भी लॉन्च करा है। सो ऐसा फाउंडर इन एंजल इन्वेस्टर्स, आपकी क्या बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स? मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स, they claim to be angel investors, or they say they are angel investors. There is no harm in asking an investor before getting into a call, or at least before getting into a second round of call, or before you follow up, what is the last deal that you invested in, right? आपको ये चेक करना है कि जो इन्वेस्टर को आप फॉलो अप कर रहे हो उसके पास उसने कहीं डाला है और कब लास्ट डाला था. Because there could be investors who were investors at some point in time and are no more investing. There could be people who have never invested. There could also be people who don't, right? Like who don't have, or who have a cash flow issue at this point, or have just taken a step back, right? So I think for me, the simple key message is know your investor and be upfront in asking them, are they willing to deploy capital? Do they have capital available to deploy? And if they haven't deployed ever, and if they don't have the capital to deploy, you shouldn't waste your time there. You should rather waste that time in building your business or trying to reach another investor who has the capital and is willing to deploy capital. ओके ओके सर। अब्दुल सर, आपको लगता है जो इंडियन बिजनेसमैन है, रिच फैमिली के बैकग्राउंड से जो लोग हैं, इस समय स्टॉक मार्केट की जगह, रियल एस्टेट की जगह स्टार्टअप में पैसा लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है? जरूर इंटरेस्ट है, बट वो अभी भी इतना like it's still not moving across the whole ecosystem, right? There are some families who have moved in and they love it,
right? They like it, they understand it. But there's, and if you ask me what's the percentage, probably it's still less than 10%, right? And when I mean 10%, it probably is across high net worth families to mid, about, a broader range, right? Not restricting it to top 10, 15, 20 families in the country. So I think it still can, and even in those families who are deploying, this probably is not the largest chunk of their capital allocation, right? उनका इतना wealth है तो उसमें से probably 5 या 10% यहाँ पे allocate है, right? Which is not still good enough. I think there can be a larger capital allocation from those set of family offices. Okay, Abdul sir. Okay, so Abdul sir, thanks for giving your time. Now I am ending this interview and I hope कि ऑडियंस को काफी मजा आया होगा इस इंटरव्यू से, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, वैल्यूएबल लेसन्स वो इस इंटरव्यू से लेके गए होंगे। एंड आप में से किसी को भी अब्दुल सर से कनेक्ट होना है, उनसे पिच करना है, उनको अपना स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताना है, तो उनको सर आप बताइए कैसे वो आपको पिच कर सकते हैं, कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन क्या है? The most ideal option is LinkedIn पे connect request भेज दीजिए और आप कनेक्ट होने के बाद हाय हाउ आर यू कुछ ना पूछे, आप सिर्फ बताइए आपका नाम, आप क्या करना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हो डेक के साथ। दैट्स द मोस्ट थिंग। एक मैसेज में आपका मैसेज मिल गया, 1-2 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑसम। मैं अब्दुल सर के लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जिससे आप सब लोग डायरेक्टली उनकी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। सो अब्दुल सर, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आपने अपना प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, और उनके साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी। थैंक यू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिले होंगे। अगर आपको फंडिंग के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में और जानना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट sonivision.in को विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कैसे आपको ग्रोथ के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर मदद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिले होंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, हमें इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।